So student, now we will see the permanent tissue. Okay, now what are the permanent tissue? After some duration, meristematic tissues lose their ability to divide. Okay, we have seen that they lose their ability to divide and take up the specific role and form a permanent tissue, isn't it? Now this process is called the differentiation. As we have seen that the meristematic tissues and convert into the permanent tissues, these tissues are called as a differentiation. Now these differentiated tissues or we can say these differentiated meristematic tissues form the different types of permanent tissue. Understand? Now we will see then another type, that is the characters of permanent tissue. What are the characters of the permanent tissue? In permanent tissue, cells are thin or thick or thin or thick walled or living or dead or the mature also. The shape of permanent tissues may be oval and rounded, or the polygonal or elongated tubular structures, or sometimes maybe fiber like structures. Okay, then they have intercellular spaces sometimes, or may they do not have the intercellular spaces, and the power of division, they lose the power of division of the cell and they do not take the growth later, यानी उसके बाद उसका growth रुक जाता है. So this is we have the characters of permanent tissue. Now come to the complex permanent tissue. What are the complex permanent tissue? What are these? Some idea we will take about. Then we'll see in the NCERT book in a detailed explanation about this complex permanent tissues. Now complex permanent tissues are made up of more than one type of cells. कोई एक ही प्रकार के cells नहीं होते, बहुत सारे प्रकार के होते. They are more than one type of the cells. All those cells coordinate to perform a common function. हालांकि बहुत सारे टाइप के होते, लेकिन सभी cells कैसे होते? Common functions में. Okay, they are in common function on the basis of the nature of the cells. Complex permanent tissues are of two types. First of all, the xylem and the phloem. Now together, when we talk about the xylem and phloem, we call it as a vascular bundle or the vascular tissue. So these particular two type of the cells, xylem and phloem, we can see in this topic in detail how they can work, what are the function, what are the types of the complex permanent tissue, especially xylem and the phloem, and then we will understand how they are situated in the particular cell. So let us see in our NCERT book detailed structures and functions from the light board. Okay, student. Now we have seen that earlier we have seen a simple permanent tissue. Now come to the complex permanent tissue. Now the different type of the tissues we have discussed until now are all made up of one type of the cells which look like each other. जैसे देखे थे हमने parenchymatous tissues, collenchymatous tissues, chlorenchymatous tissues, and the arenchymatous tissues. They are all simple. Such tissues are called the simple permanent tissues, isn't it? But yet another type of the permanent tissue is called the complex tissues, or we call it as the complex permanent tissues. Okay. Now complex tissues are made up of more than one type of the cells. And generally हमने क्या देखा था simple permanent tissues में क्या देखा था? They सिर्फ नाम अलग है लेकिन लगभग same ही थे, isn't it? The same shape and size are there. But here is very different now because these type of cells have the different shapes and size also. So all these cells coordinate to perform the common function. Okay, common function होते हैं लेकिन cells के types या shapes अलग अलग होते हैं. If we talk about the xylem
and the phloem. Now, what is this xylem and phloem? We already talked about in the section cutting of the stems, isn't it? क्या बताया था हमने section xylem and phloem? Xylems are the responsible for conduction of water and goes from down to up, यानी कि रूट से वाटर लिया तो कंडक्शन कहाँ से हो रहा है? जाइलम से हो रहा है, isn't it? And if you talk about the phloem, we talk about the top of the plant, that means the leaf, the preparation of the food materials prepared by the leaf and the transfer or transport the food material from bottom to the top, यानी कि phloem खाना बनाता है लीफ से और टॉप टू द बॉटम तक पहुंचाता है. जाइलम एब्जॉर्प्शन करता है, रूट एब्जॉर्प्शन करते हैं वाटर और वो पूरे कौन पहुंचाता है? जाइलम सेल्स पहुंचाता है फ्रॉम बॉटम टू द टॉप. अंडरस्टैंड दिस? सो जस्ट वी हैव द लुक ओवर दिस. जाइलम एंड फ्लोएम आर द एग्जांपल ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यूज. तो हम ये जाइलम एंड फ्लोएम भी एक प्रकार के कॉम्प्लेक्स टिश्यू पे पढ़ाई करेंगे. दे आर द बोथ कंडक्टिंग टिश्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूट द वेस्कुलर बंडल. और इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? बोथ आर कॉल्ड द वेस्कुलर बंडल. ओके, वेस्कुलर बंडल. एंड वेस्कुलर टिश्यूज भी हम बोल सकते हैं इसको, वेस्कुलर टिश्यूज. इट इज अ डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लांट. ये बहुत ही डिस्टिंक्टिव फीचर है जाइलम एंड फ्लोएम की. अगर बात करते हैं जाइलम and phloem, they are the distinctive features. One of that, the made possible their survival in the terrestrial environment. Figure number 6.3 we'll see afterward, showing a section of the stem. Can you see the different types of cells in the vascular bundles? वैसे तो हमें वेस्कुलर बंडल्स हमने सेक्शन कटिंग में देखा था, isn't it? कैसे दिख रहा था वो? इस प्रकार से दिख रहा था, तो गोल गोल सेल्स से पूरे सेक्शन में. तो आपने देखा होगा, ये टीएस की बात कर रहा हूँ मैं. तो ये फ्लोएम टिश्यू थे यहाँ ऊपर में, फिर ये जाइलम टिश्यूज थे यहाँ पे भी ऐसे फ्लोएम टिश्यू थे, isn't it? ये जाइलम टिश्यू थे. तो इस प्रकार से हमें दिखते थे. मगर नाउ वी हैव टू सी दैट हाउ एक्चुअली इट लुक्स. ओके, हाउ एक्चुअली इट लुक्स. नाउ जाइलम कंसिस्ट ऑफ द ट्रैकिड्स. सबसे पहले हम ये क्या लेते हैं? ट्रैकिड्स. ट्रैकिड्स, वेसल्स और जाइलम पैरेन्काइमा. यानी कि इसमें हमें ख्याल देखने वाली बात है कि ये जो ट्रैकिड्स है, वेसल्स है, जाइलम पैरेन्काइमा एंड द जाइलम फाइबर्स आल्सो. ओके, एंड द जाइलम फाइबर्स आल्सो. तो दीज आर द टाइप्स ऑफ द जाइलम. ये इतने प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4 5 प्रकार के सेल्स होते हैं. ठीक है. जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिड्स, ओके, देन वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा and the xylem fiber. So these are the picture here, we'll see afterwards in the next slide. The tracheids and the vessels have the thick wall. यहाँ पे एक ख्याल देने वाली बात है कि tracheids and vessels have the thick wall. उनके wall कैसे thick है. And many are the dead cells. Okay, actually they are the dead cells when they mature. And tracheids and vessels are the tubular structures. देख लिया हम, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ट्रैकिड्स एंड वेसल्स. या दोनों भी गोल शेप में, थोड़े से ट्यूबुलर पॉइंटर शेप में है, isn't it? And this allows them to transport the water and minerals vertically. यानी कि नीचे से ऊपर जा रहा है, isn't it? नीचे से vertically. ठीक है. And the parenchyma stores the food. Parenchyma stores the food. यानी कि xylem parenchyma stores the food. Xylem fibers are mainly supportive in function. ये ख्याल में रखने का है, it is supportive in function. Mainly it is a supportive in function. Now come to this particular big diagram. See this? These are the pits in the xylem tracheids, xylem vessels और ये xylem and parenchyma. ठीक है. ये इस प्रकार के सेल्स होते हैं. इसके अंदर न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं. See, this is all the nucleus is also present. The pits means that is some pores or very holes like structures are there. In the tracheids also the holes are also present in the xylem complex tissue. Now come to the next part, phloem. Phloem is made up of 5 types of cells. Sieve cells, ठीक है, sieve cells आ जाओ, sieve tubes, companion cells,
and phloem fibers. Okay, phloem fiber. So this is about the phloem tissues. It is made up of 5 types of cells: sieve tubes, companion cells, phloem fibers, and the phloem parenchyma. Phloem parenchyma. ठीक है, ये चौथा हो कहते हैं, ये पांचवा. And sieve tubes are tubular cells. इसमें भी कैसे था, जाइलम के सामने ट्यूबुलर सेल्स है एंड विद परफोरेटेड वॉल. परफोरेटेड वॉल मीन्स थोड़े से थिक भी नहीं है और थिन भी नहीं है, परफोरेटेड वॉल. एंड फ्लोएम ट्रांसपोर्ट द फूड, एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर, इट ट्रांसपोर्ट द फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि टॉप टू द बॉटम, यानी रूट को भी खाना अगर पहुंचाना है तो कौन पहुंचाएगा, फ्लोएम टिश्यूज. एंड एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स, other phloem cells are the living cells. and सिर्फ एक्सेप्ट द फ्लोएम फाइबर्स, वो सिर्फ डेड है, बाकी सब कैसे है, लिविंग सेल्स है. तो चलो अब दूसरा देख लेते हैं हम लोग. सीव प्लेट्स, ये सीव ट्यूब्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, कंपेनियन सेल्स. तो इस प्रकार से ये पूरे एक कंडक्टिंग, ये भी कंडक्टिंग टिश्यूज है, isn't it? They are conducting the food material from the top to the bottom. So these are the structures of the companion cells. These are structures of phloem parenchyma, sieve tubes and the sieve plates. So बीच-बीच में sieve plates रहती है, वो हर एक फूड का ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है. So these are all the types of complex tissues. Thank you. Now student, we will see in a detailed structures of the epidermal cells. But before we are going to this, just recall that which gas is required for the photosynthesis. As we have already explained in the description of the epidermal cells, which gas? That is called the CO2 gas. Okay, CO2 gas is required. Now, when we talk about find out the role of transmission in plant, that also we have discussed. What is the role of the transpiration? Excess amount of water to be pulled out from the plant. That is called the, in form of the water vapors, that is called the transpiration. Now come to the epidermal cells of the roots. Now when we talk about the epidermis, it is present in a stem and root both. So the epidermal cells of the root, whose function is water absorption. What is the function here? Water absorption. Main function तो उसका वही है. Now commonly bears the long hairs. चलो यहाँ पे हम देख लेते हैं, बना लेते हैं. If you just, we have this particular roots are there and these are the root hairs are there. Okay, so these roots hairs are very long and it goes to for the water absorption. Now commonly bear the long hairs like part greatly increase the total absorptive surface area. जहाँ जहाँ पानी होता है वहाँ वहाँ पे वो roots पहुँच जाती है for the absorption. And the roots are just totally finding the where the water is present inside the soil, isn't it? Now in some plant like desert plant, we have already discussed about a desert plant, but here we will go more detail. Desert plant epidermis has a thick waxy coating of cutin. यहाँ पे thick waxy इसलिए कि अगर कुछ भी अगर वहाँ पे आया तो पानी लॉस नहीं होना चाहिए, isn't it? And coating of cutin एक केमिकल होता है, chemical substance with the waterproof quality. That means the water should not leave in the, बाहर जाना नहीं चाहिए, waterproof quality. And on its outer surface can be think the reason for this, for the already in the desert region, what is there? There are loss of water is there, isn't it? Less of water is there, and less of a quantity of water is there. So what the plant will do? It will secure, it will store the water inside the plant and they will not remove. ज़्यादा उसको लॉस होने से बचाता है. और वहाँ पे देखो डेजर्ट प्लांट में हमने देखा होगा कि क्या दिखता है जनरली. अगर हमें ओपनशिया प्लांट का लेता है, ये जैसे ओपनशिया आपने देखा होगा, कैक्टस प्लांट जिसे हम कहते हैं, तो यहाँ पे ये स्पाइंस जो रहते हैं, दिस इज ऑल द स्पाइंस. नाउ देयर इज नो लीव्स बट द स्पाइंस आर देयर. That means the leaves are modified into the spines. यानी लीफ की कोई ज़रूरत ही नहीं थी, कोई वाटर लॉस का कोई चांसेस ही नहीं है वहाँ पे. इसलिए वहाँ पे क्या होता है, ये वाटर प्रूफ क्वालिटी डेवलप होती है प्लांट में. एंड दिस इज द मेन रीजन फॉर दिस. नाउ इज द आउटर लेयर ऑफ द ब्रांच ऑफ द ट्री.
अगर हम ब्रांच की आउटर लेयर की बात करते हैं, इज डिफरेंट फ्रॉम द आउटर लेयर ऑफ यंग स्टेम्स? Yes, of course, because the young stem has a different type of the cells and the older branch has the different type of the cell, isn't it? Young stem में कौन से cells होते हैं? Meristematic cells, isn't it? These meristematic cells are present. As the plant grow older, the outer protective tissues undergo certain changes. Strips of secondary meristem. अब यहाँ पे हमने पढ़ा था secondary meristem. Located in the cortex forms a layer of the cells which constitute the cork. हम cork की हम बात करेंगे. This is the cork. Cork cells are also there and is compactly packed cell. There is no intercellular spaces also there. So the cork cells or the cork, the dead, they are the dead and compactly arranged without intercellular spaces. Without any intercellular spaces. This is very important. Now figure number 6 point एक बार फिर देख लेते हैं. See this, there is no any such spaces are there. They are very compactly packed, and some just before the cork cell we can say that these are the epidermis, but some cells are ruptured, isn't it? If we talk about the outer part, बहुत सारी चीज़ होती है. जानवर से अगर उसका रप्चर जाता है, कभी कोई और चीज़ से कोई ह्यूमन बींग वहाँ पे आके उसको प्लांट्स को ये कर देता, रप्चर कर देता, दैट इज ऑल्सो मे बी हैपन. सो they have also substance called the suberin. अब वो कहाँ कन्वर्ट हो जाता है? Suberin. They also have the substance called the suberin में उसको बोलेंगे. That compact part of the cork material, and their walls are made by the impervious to gases and water. Impervious का मतलब आना और जाना, यानी कि gases का CO2 and O2 is also can be impervious, इसको नहीं जान देता है. It is to be blocked over there, यानी कहीं से भी किसी भी प्रकार से लॉस होने का संभावना नहीं रहती. और उसके अंदर कौन सा प्रकार का सेल रहता है? सुबरिन सेल्स कैसे बने रहते हैं? सुबरिन के, isn't it? तो ना अगेन वी विल सी दिस डायग्राम, द रप्चर्ड एपिडर्मिस. आपने देखा होगा अभी जस्ट व्हेन वी टॉक अबाउट द स्किन ऑल्सो, व्हेन यू स्क्रब योर स्किन, व्हाट हैपन? द अपर लेयर ऑल्सो ऑफ योर स्किन और एपिडर्मिस में रप्चर्ड, बट यू नो you can't feel that the new cells are also forming within a 5 to 6 hours, isn't it? Because continuously the cells are growing cells. Your cells are continuously diminishing and again making the new cells also. तो ऐसे ये plant में भी होता रहता है, isn't it? So this is about the detailed structure of the epidermis. Now move to the next topic. Thank you.